Despite the government taking a firm stand, a defiant Ajit Singh has questioned leaders like Shahnawaz Hussain, Yashwant Sinha and others in the 2004 cabinet, accusing them of not vacating their houses. Singh even daring the district administration by visiting two MLAs who are in hospital after yesterday's clash at Ghaziabad. As outrage grows over Ajit Singh's defiance, the former minister and RLD chief starts shifting some of his belongings from the house. But is it not time for the drama to end? सर एक रिएक्शन चाहिए आपका। सर आपने अभी भी ये कहा है कि ये घर जो है मेमोरियल कन्वर्ट होना चाहिए सर, लेकिन सरकार कह रही है द गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर दैट इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरियल। इट्स अ पर्टिकुलर रूल, इट्स अ गाइडलाइन। आफ्टर 2000 जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पहले, जी क्या नाम? आफ्टर 2000 हाँ बताइए। नहीं प्रधानमंत्री पहले थे लाल बहादुर शास्त्री। आफ्टर 2000 हिज मेमोरियल वाज मेड। Okay. Then Kashi Ram. So you are saying... No, listen. And then Jagjeevan Ram only 6 months ago. Sir, but Narasimha Rao, the former Prime Minister, also former Prime Minister Chandrasekhar, not asking for a memorial. They have not asked That's for a memorial. That's not the issue. Sir. That's not the point. Point is what you said was that there are rules that after 2000 you cannot do it. Then the governments have... So, but then that is something that... The government was also there after 2000. So it has happened in 3 cases. But sir, that is something that you should take up instead of insisting for a memorial. That is an argument that you should... What's the argument? We are asking for it. It has been done before. That's the argument. So you are saying you will move out because your personal belongings are going away. So you are saying that you will move out, but the demand for a memorial in this house remains. Yes. Sir, but shouldn't you take this up with the government instead, because other prime ministers haven't done it, sir? When they came on 9th, I informed them that I have signed a lease and we have sent some stuff also. But now it's Pitru Paksh, so as soon as it's over, about 2 weeks or so, I'll move on that day. Memories, the feelings of lakhs of farmers are attached to this house. Okay. Because my father lived here. क्या शाहनवाज का खाली कर रहे हैं? क्या यशवंत सिन्हा खाली कर रहे हैं? और अगर आप और पीछे जाइए, ये जो मंत्री जी हैं और इनके जो मंत्री साथीगण जो 2004 में मंत्री नहीं रहे थे, they still lived for 10 years in the house they were not entitled to. Joining me now is RLD Chief Ajit Singh ji. Sir, thank you for speaking with Times. Now, sir, a lot of violence took place yesterday and your workers are being accused. How do you justify the violence and the effort to stop water supply in Delhi, sir? ये पहली बात तो ये कि सरकार को, केंद्र सरकार को अच्छी तरह पता था, प्रदेश सरकार को भी पता था कि 18 तारीख को यहाँ पे चौधरी साहब के स्मृति चिन्ह बनाने की मांग को लेकर आंदोलन होने वाला है। बल्कि उन्होंने तो ये भी अनाउंस कर दिया था कि पानी और बिजली रोकेंगे वो। क्या केंद्र सरकार को बात नहीं करनी चाहिए थी? आप अगर रहें, मैं नहीं जानता कितने दिनों आपके इसमें है जर्नलिज्म में, 10, 15, 20 साल पहले जब टिकैत में आंदोलन किए किसान, तब हमेशा सरकार ने बात की और हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से ज्यादातर वो सुलझ गए। इस बार सरकार को अच्छी तरह पता था कि क्या मांग है, क्या समस्या है, फिर भी उन्होंने कोई कदम, बात करने में क्या ऐतराज है? प्रजातंत्र में बात से चीजें तय होती हैं। Sir, but the fact is that in 2000 the Union Cabinet had banned the conversion of bungalows into memorials. Despite that, do you think the demand is justified, sir? And then Lal... You were the minister then? Yes, and No, I wasn't a minister in 2000. Anyway, लाल बहादुर शास्त्री जी का मेमोरियल है उनके मकान में जिसमें वो रहते थे। बाबू जगजीवन राम का तो अभी हुआ है 5-6 महीने पहले, जिस मकान में रहते थे स्मृति बनी है। काशी राम जी का हुआ है, तो फिर इसका क्या मतलब है कहने का? So do you think there are double standards by the government in that case? उसमें क्या, आप मेरे ही केस में देख लीजिए। मैं 9 तारीख को मैंने, जो उनके लोग आए थे CPWD के, उनको कह दिया था कि ये चल रहा है, मैंने लीज साइन कर दी है पिछले महीने के आखिर में, नए मकान के बारे में मैं रेंट कर रहा हूँ, और ये जैसे ही पितृ पक्ष खत्म होगा 24 या 25 को हम आपको इसका पोजेशन दे देंगे। इसके बाद बिजली पानी काटने का क्या मतलब था? और इसके अलावा आप और देखिए कितने, क्या शाहनवाज का खाली कर रहे हैं? क्या यशवंत सिन्हा खाली कर रहे हैं? और अगर आप और पीछे जाइए, ये जो मंत्री जी हैं और इनके जो मंत्री साथीगण जो 2004 में मंत्री नहीं रहे थे, they still lived for 10 years in the house they were not entitled to. I'm not entitled to live in this house and I'm leaving. Why did they live for 10 years in houses they were not entitled to? Sir, you are assuring on Times that you will be vacating the house soon, around 25th, 26th. Told them on 9th, told them already. हम तो करीब खाली हो चुका, बस पोजेशन देने में छोटी मोटी चीजें रहती हैं।
जहां तक श्री अजीत सिंह जी का सवाल है, अजीत सिंह जी हमारे मित्र है। अजीत सिंह जी बीच में मेरे से मिला और उन्होंने कहा मुझे और कुछ समय चाहिए, तो समय दिया है उनको 80 दिन के बाद। पहले 1 महीने का हर एक को समय देते हैं, वो समय पूरा होने के बाद और 80 दिन पूरा होने के बाद सरकार में उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने एक काम किया है। ये केवल श्री अजीत सिंह जी महोदय के लिए किया नहीं। The country is seeing the farce of Mr. Ajit Singh. Mr. Ajit Singh, who is a former lawmaker, should not behave in this way. He's trying to bend the rules. He's trying to hold the country to ransom. There are rules laid down for allocation on vacation of the quarters in Lutyens' zone. There was a cabinet note in 2000 which categorically mentioned that memorials cannot be made out of government accommodation. There was a July 2013 Supreme Court notification and order which categorically speaks about the fact that memorials cannot be made in Lutyens' zone. In spite of this, Mr. Ajit Singh is trying to hold the country and particularly the capital of this country into ransom. This is deplorable. Mr. Ajit Singh should know that if he really wants to raise the issues of farmers, then he should be seen on the ground fighting for them rather than trying to buy privileges for himself. The rule holds equally for all of them, and this notice has been served to all the members of parliament who were in an illegal way staying in the premises. चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, किसानों के नेता थे। भूमि सुधार और किसानों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनके हित के लिए ग्राम विकास के बड़े काम हैं। हमें लगता है कि अगर उनकी मेमोरियल की बात उठती है तो देश के आने वाली पीढ़ी को जो नेताओं की धरोहर है या नेताओं के काम है उसकी जानकारी के लिए इस तरह से अगर मेमोरियल बनाने की बात होती तो हमें लगता है कि लोगों ने उसका स्वागत करना चाहिए। So when they came on 9th, I informed them that I have signed a lease and we have sent some stuff also. But now it's Pitr Paksh, so as soon as it's over, about 2 weeks or so, I'll move on that day. क्या शाहनवाज का खाली कर रहे हैं? क्या यशवंत सिन्हा खाली कर रहे हैं? और अगर आप और पीछे जाइए, जो मंत्री जी हैं और इनके जो मंत्री साथीगण जो 2004 में मंत्री नहीं रहे थे, they still lived for 10 years in the house they were not entitled to. समाजवादी पार्टी इस बात के पक्ष में कि चौधरी चरण सिंह जी का स्मारक बनना चाहिए, उनकी यादगार बनी रहनी चाहिए। किसानों के देश के सबसे बड़े नेता थे, देश के किसानों को बहुत कुछ दिया। राजनीति में भी उन्होंने एक इच्छा भी बनाई, एक संदेश दिया। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से उसकी मांग कर रहे हैं, इससे तो चौधरी साहब की गरिमा को गिरा रहे हैं। होड़दंग करके, पानी बंद करके, जबरदस्ती कब्जा करके कभी चीजें नहीं बनती हैं। राजनीतिक ढंग से मांग करके और सम्मान के साथ चीजों को बनना चाहिए। तो जो लोग ये कर रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सब बंद करें। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, हम लोग भी केंद्र से मांग करेंगे कि चौधरी साहब का स्मारक बनना चाहिए। Disrupting traffic, disrupting power, disrupting water, I think it's not just unfair, I think it's patently wrong. And I think government agencies must take cognizance of this and take very, very severe action. See, a government facility is not mine by right. It's only mine till I occupy a particular position. Once that position is not there, as I said, if rules permit you for a while, or perhaps the government can be kind enough to permit you if there are certain, extraordinary, which could be. I mean, I remember him saying somewhere that Shraddh ka samay hai. So maybe if it's an extraordinary circumstances, you can request the government. You can't demand it as a right. And any such protest, ultimately leads to distorting of the way in which people think about public utilities or public services or government assets. And government assets are ultimately public assets. Conduct towards people who have been in high office of this government, I think is extremely unpleasant. I think it's unbecoming of a democracy of our kind to be switching off water and electricity of people who have been in high office. Which is not to say that we have a right to stay in high office or in accommodation of high office indefinitely. But I think these are very small issues that can be settled amongst people who have to implement the law and people who are at the receiving end of the implementation of the law. To make a spectacle of it by switching off electricity and water, I think is
is extremely reprehensible. At least that's our view. As to the aspirations of the people, particularly people of Western UP, a lot of farmers who saw in that house or who saw in the family or the memory of late Charan Singh something special for the country and for themselves, and for their desire that be honoured in a particular way. This is really for them, in part of our democratic setup, to reach out to the government and put it across to the government, and I believe the government would then be obliged to respond in a suitable manner. We are not there either to propagate or to respond.